Hello, good morning, students. Welcome to e-learning. We are learning chapter 8 in economics of standard 12, that is agriculture sector. And today we are going to start with our second lecture. In the previous lecture, lecture 1, we have completed the importance of agriculture sector. If you have not seen, please watch that particular lecture. In that, we have discussed about the 3-mark question, which is most importantly coming up. That is why agriculture sector is called as the backbone of India. So that particular thing has been very well explained, and you just go with that particular video. Now today's lecture we are going to know about the present situation of agriculture sector in India. हमारा agriculture sector का situation कैसा है अभी के हाल के अंदर. So this all data आर एज पर मैं पहले ही बता देता हूँ, ये पूरा डेटा 2011 सेंसस के हिसाब से है. ओके, बट स्टिल इट इज़ फॉर योर नॉलेज, इट इज़ फॉर योर एग्जामिनेशन. अभी तक कुछ बदला नहीं है. नेक्स्ट सेंसस इज कमिंग इन नेक्स्ट ईयर. So you have to go with this 2011 and some of the estimates as per the 2014 and 15 has been given. Now in this there are 6 points are there, but today we are going to cover only 3 points, that is contribution in national income, employment and export income. So these 3 topics we are going to talk, where agriculture sector, how it was in the earlier eras and how it is at the present time. So let's talk about the present situation of agriculture sector. So when we see or when we talk about present situation, we find that agriculture sector, in the importance only we have learned that agriculture sector has been doing what is been focusing on good production. Good production will give them good employments. Good employments will raise the income standard, as well as we find that good crops which are been grown are been exported, which help us to gain foreign income. बाद में हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी. तो अल्टीमेटली ये पूरा इंडस्ट्री एरिया के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा. तो ओवरऑल वी फाइंड दैट दिस एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एन बैकबोन विच प्रोवाइड एवरीथिंग टू द इंडस्ट्री सेक्टर, एंड इंडस्ट्री सेक्टर प्रोड्यूस करके सर्विस सेक्टर को जॉब पे लगाता है. तो अल्टीमेटली वी फाइंड दैट अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फुलफिल हो रहा है, अच्छे से जा रहा है, तो सब कुछ अच्छे से हो रहा है. आवर होल नेशन इज ग्रोइंग एंड गोइंग वेल, growing also and going also well, or it is at progress. But mainly वी शुड नो कि एम्प्लॉयमेंट कितना परसेंटेज दे रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर. पहले कितना दे रहा था, अभी कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. पहले कितना नेशनल इनकम में इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, अभी कितना कंट्रीब्यूशन है. एक्सपोर्ट कितना कर रहा था पहले के टाइम पे, कितना परसेंटेज उसका होल्डिंग था एग्रीकल्चर सेक्टर, और अभी कितना होल्डिंग है. सो ऑल दिस थिंग्स शुड बी नोन टू अस, सो वी हैव अ बेटर आइडिया व्हेन समवन विल टॉक अबाउट दैट इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड हाउ यू हैव डिफाइंड इट, व्हाट यू नो. सो ये पूरा जानकारी आपके पास होना चाहिए. यू आर इन 12th स्टैंडर्ड. चलो, so let's start with this particular present situation where we are going to talk about the employment. Before employment, we are going to talk about the share in the agriculture sector, national income, share of agriculture sector in the national income, and then after we are going to talk about the export income. तो ये 3 टॉपिक आज कवर करेंगे, दूसरे 3 टॉपिक कल कवर करेंगे. ठीक है, चलो. सो लेट्स टॉक अबाउट द हियर फर्स्ट पार्ट, दैट इज nothing but we can say share in agriculture sector. But before that, just remember agriculture sector मतलब फार्मिंग अकेला क्रॉप ग्रोइंग नहीं, उसके साथ साथ एलाइड एक्टिविटीज़ आता है. एलाइड एक्टिविटीज़ मीन्स इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स, पॉटरी फार्मिंग, फिशरीज एंड कैटलरी. तो अकेला एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, लेकिन प्राइमरी बेसिस पे जितनी भी चीज़ ग्रो होती है, जितनी भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, चाहे वो एनिमल से आए, चाहे वो फार्मिंग से आए, तो ये पूरा चीज़ किस में आता है, allied activities में आता है, and which has been included, which is the second half of the agriculture sector. So we find that agriculture plus allied activities together becomes primary sector, and it is also called as income of the agriculture sector is also known as income of the primary sector. तो ये पूरा agriculture and allied activities बन के primary sector बन जाता है. So we are not only talking of agriculture sector, but we are talking whole about the primary sector here. So we find that in the contribution in the national income of our agriculture sector from 1950, the years, this particular data has been taken from 1950-51. Every 10 decades or every 10 years, that is 1 decade has been taken up. So 7 decades are there, 1950-51 से लेके 2010-2011 तक, and ये पूरा चीज़ हम स्टडी करेंगे, लेकिन एनालाइज कंक्लूजन में सिर्फ 2 और 3 और मैक्सिमम 4 इयर्स के डेटा लिखेंगे, लेकिन बट स्टडी करने के टाइम पे हम कुछ पूरा पढ़ेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट 1950-51, दैट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द नेशनल इनकम वाज 53.1%. कितना? मोर देन 50%, दैट इज 53.1% ऑफ शेयर इज बीन ओनली
और इट इज़ बिन ओनली गिवन बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा नेशनल इनकम में गिना जाए तो 53% पार्ट रहता था। इतना इनकम तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा था हमारा पूरे नेशनल इनकम में, बिकॉज दैट टाइम वी फाइंड दैट इन 1950-51 देयर वाज नॉट मच डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स नहीं थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप नहीं हुआ था, पब्लिक सेक्टर भी अभी अभी बन रहे थे। तो यू फाइंड दैट जैसे इंडिया फ्रीडम में आया तो यू फाइंड दैट इंडिपेंडेंट हुआ, new things are started coming up, but still in 1950-51 agriculture sector was most important, and it was giving 53 more than 50% to the national, it is contributing to the national income. When after one decade, that is 1960-61, we find that 48.7%, मतलब वो reduce होके 5% और 4 point समथिंग परसेंटेज से रिड्यूस हो गया। सो ये कहने का मतलब क्यों हुआ, यहाँ पे बीच में 1950-56 देयर वाज 5 ईयर प्लान विच वर मेड। यहाँ पे प्लान हमारे गवर्नमेंट ने क्या बनाया था, 5 ईयर प्लान्स बनाया था। 5 ईयर प्लान्स मतलब कि 5 साल तक हम पूरा फोकस करेंगे, 5 साल के अंदर क्या क्या चीज़ बनाना है, तो 5 ईयर प्लान्स बनाए थे। सो जिसकी भी गवर्नमेंट आती थी, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर और हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ही फोकस ऑन द 5 years of his tenure and he planned according to it. So that particular situation, in the second 5 year plan, they have given more importance to industrialization. So in 1956 industrialization came and they have introduced. So from that time you find that the more focus was given to the industrial sector, because we were left behind by the Britishers, वो लोग ने हमको रूल किया था। तो टेक्नोलॉजी वाइज हमारे पास कुछ नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ नहीं था। सो दैट्स पर्टिकुलर थिंग डेवलप करने के लिए, टू बिकम स्ट्रॉन्ग अगेन बैक इन द फील्ड, सो यू फाइंड दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज बीन फोकस्ड मोर, एंड हमारा जो मेन प्राइमरी सेक्टर एंड द मेन इनिशियल सेक्टर जो 50% से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, वो कम हो गया 48.7% इन 1960-61. दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, दैट इज़ दे हैव गिवन मोर एम्फसाइज और ग्रेट एम्फसाइज ऑन industrialization started from 1956. Now then after again one more decade went and 48 से 42.3 आ गए, तो हम 6.4% का फॉल देख रहे हैं यहाँ पे इन द 10 years ऑफ गैप। अगेन 1980-81 में वापस फॉल होके कितना है, 6.2 से वापस घट गया। तो यू फाइंड दैट हियर देयर वाज अ ग्रेजुअल डिक्रीज, और देयर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टूवर्ड्स और कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स दी नेशनल इनकम। ये क्यों हुआ, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, बहुत सारी पब्लिक कंपनी स्टार्टेड हुई। ये पूरा हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, कैसे पब्लिक आया, पब्लिक से कैसे 1991 तक था, और 1991 के बाद कैसे प्राइवेटाइजेशन आया। सो यू फाइंड दैट टिल 1991 यू फाइंड इट हैज़ रिड्यूस टू 29.6, तो कहाँ पे 53.1% है और कहाँ पे 29.6% पे आ गए। Again in 1991 we find that they have introduced industrialization policy, as well as they have introduced LPG, liberalization, privatization and globalization, and because of this there was more focus on FDI, foreign direct investment, there was more focus on privatization, there was more focus on foreign institutional investment. तो ये पूरा चीज़ करते करते the results are been seen in 2001 and 2000. सो 2001 के अंदर वो पूरा रिड्यूस होकर 22.3 पे आया, एंड लास्टली द 2010 एंड द 11 सेंसस शोज दैट ओनली 13.9, दैट इज नियर अप्रॉक्स 14% ओनली is been contributed by the agriculture sector towards our national income, where most contribution is now given by the इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर। अगर पूरा वो भी देखा जाए तो सर्विस सेक्टर ज़्यादा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बीच में ग्रो हो रहा था, बाद में सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छे से ग्रो हुआ। दैट्स वाई वी फाइंड दैट इन योर एरा, और अगर आप अपने 10-15 ईयर्स बैक देखा जाए तो देयर वाज नॉट सच मच बैंक्स वर देयर, बट आज इतनी सारी बैंक्स अवेलेबल है। अगेन देयर इज सो मैनी मर्जर, बट स्टिल यू नो सो मैनी बैंक्स वर देयर, बैंक्स आर देयर, एंड वो उसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए। सो सर्विस सेक्टर हैज़ ग्रोन वेल। So you find that, to conclude, we find that our economic survey 2011 and 12 says that when we started from 1950-51, it was 53.1% which is contributed to our national income, which has reduced to 13.9% in 2011 and 10. अगर डायरेक्ट पहला और लास्ट लेना है तो लास्ट ले सकते हो, नहीं तो 1950-51, 2001, 2000 ले सकते हो, एंड 2010 एंड 11 ले सकते हो। सो यू कैन शो द ग्रेजुअल डिक्रीज।
Again you find that इसका main point you have to write that this decrease is due to the great emphasis or great impact which is given on the industrialization. कब से 1956, that is second 5 year plan. So ultimately we find that कि हमारा agriculture sector बहुत कम हो गया. The growth of agriculture sector has become very less. It has declined over the period of time, and we find that there was much more development in the industry and the service sector which was been seen over the period of 70 years. मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वन दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट की बात मतलब जॉब की बात करें तो कितने लोगों को जॉब मिलती थी. अगर इंडिपेंडेंस की बात करें 1947 या 1950 की बात करें, सो 72% ऑफ पॉपुलेशंस वर एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर और द अलाइड एक्टिविटीज़ विच इज़ लाइक कैटल रेयरिंग, फिशरिंग, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री फार्मिंग एक्सेट्रा. तो ये सब मिलके 72%, मोस्टली कौन, विलेजेस, और बहुत सारे अर्बन वाले भी जो इस चीज़ की ज़मीन थी वो लोग भी थे. सो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा था, इंडस्ट्रियल वहाँ पे नहीं खुला था तब, इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं थी, तो पूरा सब कुछ एग्रीकल्चर, सब लोग फार्मिंग पे फोकस कर रहे थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वी फाइंड दैट स्टिल 72% थे. लेकिन जब डेटा की बात करें, व्हेन इट केम we find that 50 years passed, and in 2000 and 2001 we see it has reduced to 58%. again 14 years की बात करें तो 49%, less than 50% of employment is now given by the agriculture sector and more is given by the both industry and the service sector. So ultimately still we find that agriculture sector ज़्यादा employment दे रहा है compared to industrial and the service sector. क्यों? बिकॉज एक ही रीज़न, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया. वी हैव फोकस मोर ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमने ध्यान नहीं दिया. सो देयर वाज स्पेशली डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर हैज़ बीन रिड्यूस. तो यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है कि भाई हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन लोग को दिया जो सेकेंड एंड थर्ड सेक्टर एंड फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर को इंपॉर्टेंस ना देने की वजह से हम पूरा 72% एम्प्लॉयमेंट के साथ रिडक्शन होके कहाँ पे आ गए, 49% पे आ गए. एंड इट इज़ एन एस्टिमेटेड डेटा एज पर 2014 एंड 15 इन 2011. ओके, ये 2014-15 की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 2011 में एस्टिमेट किया था 49 पे आ गए. स्टिल वी फाइंड दैट इट हैज़ बीन रिड्यूस. अगेन द थर्ड पॉइंट दैट इज़ एक्सपोर्ट इनकम. नाउ एक्सपोर्ट की बात करें, व्हाट इज एक्सपोर्ट? व्हेन यू हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ क्रॉप एंड यू वांट टू अर्न फॉरेन इनकम, यू ट्राई टू एक्सपोर्ट इट और यू ट्राई टू गो गिविंग सम ऑफ द प्लेसेस और सम ऑफ द कंट्रीज वेयर दिस पर्टिकुलर क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन. सो यू फाइंड दैट our country was good in exporting in the ancient time also, and after independence they also started exporting again. So you find that to earn foreign income, foreign exchange, बाहर का पैसा कमाने के लिए, बहुत अच्छे से पैसे कमाने के लिए हमने एक्सपोर्ट चालू किया. एंड एक्सपोर्ट के अंदर वी हैव फोकस्ड मोर ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप्स. एंड उस टाइम पे टोटल एक्सपोर्ट जितना भी होता तो उसके अंदर 70%, देयर वाज 70% विच हैज़ बीन गिवन बाय द कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर. मतलब 70% सामान किसका था, एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो उसका ही इनकम आएगा 70%. यस, सो यू फाइंड दैट इन द इंडिपेंडेंट टाइम. लेकिन वो भी रिड्यूस हो. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आने लगी तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनने लगी, ऑयल, आयरन एंड स्टील, एंशियंट पेंट्स, बहुत सारी कंपनीज आई. सो दे स्टार्टेड ऑल्सो गोइंग एक्सपोर्टिंग देयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू द डिफरेंट कंट्रीज एंड दे ऑल्सो शेयरिंग. सो वहाँ पे 70% जब इंडिपेंडेंस टाइम पे था वो रिड्यूस होके 2013-14 में इट केम टू 14.2%. तो कहने का मतलब वी हैव रिड्यूस बाय सो मच. सो 70% कहाँ पे और कहाँ पे 14%. सो यू फाइंड दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पूरा नेग्लिजेंस जिस एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमने किया है, इसके वजह से हम पूरे पीछे आ गए. इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक वी कैन से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सम ऑफ द एग्रीकल्चर कंट्रीज़ जो है उन लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करके ही आगे बढ़े. लेकिन वी आर नॉट, वी हैव फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड स्टार्टेड डेवलपिंग. सो वी फाइंड that agriculture sector, the most important sector, we have neglected, and the share is also been reduced due to this particular importance given to the service and the industrial sector. So conclusion, it talks about that our share has reduced
our contribution in the national income has reduced. Our employment, which was 72% employment which was given, it has came to 49%, and एक्सपोर्ट इनकम जो 70% था इंडिपेंडेंस टाइम पे वो कम होके 14.2 पे आ गया है. So you have to remember, it is all because of the industrialization, all because of the more importance given to the industry sector and the service sector, and some of the industrial policy, that is LPG, privatization, liberalization and globalization की वजह से ही हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर शेयर कम हो चुका है. इफ़ यू फाइंड स्टिल डाउट यू कैन जस्ट कॉल मैसेज मी. हम ये 3 टॉपिक आज ख़त्म कर रहे हैं, कल दूसरे 3 टॉपिक ख़त्म करेंगे, एंड देन आफ्टर विल कंप्लीट द प्रेजेंट सिचुएशन. Okay, then after we'll start the different topics. Chalo, thank you.